Morning to all. Thanks to Dr. Henneman for discovering such an intelligent science. Thank you, sir. Our Guru, Dr. Praful Vijayakar, sir. Thanks to sir for making this science so simple and calculative. Sir always says homeopathy is mathematics. सर ने साइंस को इतना सिंपल बनाया थैंक यू सर. Guru Kamal Bhaiya, Dr. Kamal Malik, I will say Kamal Bhaiya. He guide us path to make us better human being to serve a humankind. कमल भैया ने हर चीज को इतना सिंपल उन्होंने कहा कि जिंदगी में उलझना नहीं, जो करना है बहुत सिंपल, सब चीजों को आराम से तसल्ली से सिंपल वे में, ज्यादा उलझने नहीं डालने. अगर हम किसी चीज में ज्यादा उलझेंगे तो लाइफ विल बी हैम्पर्ड. Thanks to Kamal Bhaiya for everything. You make our life so simple. Thank you, sir. Thanks to Predictive Homeopathy for giving me this opportunity to share our Guru, Dr. Praful Vijayakar's sir knowledge as per my understanding. Thank you. Thanks to my parents, my friends, my brother. Thanks to everyone. Thanks for God. Thanks for God for everything He gave us. Thank you for everything. Sadhna series, we are on the Myasmtion, chapter 24, remedies and their miasm. We will continue that. We will continue with cases. So just start with our case. First case, Mrs. Seema, 35 years old. We came across this case in 2015. Please mind, she suffered from severe depression. She got anxious and used to remain sad, absorbed in her own thought. She became sleepless, loss of appetite, with no thirst, with no desire to do any work. She remained in bed. In her past history, 1 month back, her father had called her to inform about her maternal brother's-in-law death. She could not believe her ear, but went to his funeral. She was trying to pull herself out of this trauma, but unfortunately, she trying very hard. And his husband support him very much. She trying
to pull herself out of this trauma. But unfortunately, after 10 days of that incident, her maternal uncle also passed away. And again, her father rang her to inform about that. Because she has no brother, father has the only man to call him. Again, her father rang her to inform about that. Now she became totally depressed. Thereon, whenever any phone rang, she thought her father would inform her about something fatal and someone's death news. Whenever any phone rang, she think something fatal or someone's death. This thought made her more depressed. She avoided company, was not able to talk to anyone. She was annoyed at father for all these incidents, afraid of what her in-laws would say. She was so she became so anxious. She went to psychiatrist, but it only got worsened as they passed by. One fine day, she visited the clinic for her treatment. To her astonishment, she got back to her routine in 1 week, only in 1 week, after being prescribed the Simlimum. Sir, it was so simple. Sir stated everything in his lecture. Sir, make life of our homeopathy so simple and calculative. सर ने दिया हमने डाला, सर ने दिया हमने डाला, और रिजल्ट इज देयर. अभी बोलना बहुत सिंपल है कि इतनी अच्छा रिजल्ट आया, मगर इट्स नॉट सो इजी. अगर सर ने हमें ये सब कुछ नहीं दिया होता, इट वाज नॉट सो इजी फॉर अस टू ट्रीट this type of cases. To her astonishment, she got back to her routine in 1 week after being prescribed the Simlima. And after 3 weeks, she forgot all the incidents. She completely forgot one month incidents, everything forgot. उसको लगा कि कुछ हुआ था, कुछ हेजी सा था माइंड में, मगर क्या था मुझे नहीं मालूम. I forgot कि कुछ हुआ था. हाँ, पापा ने शायद कॉल किया था, father called, father rang me, but why? हाँ, मेरी कजन एक्सपायर हो गए थे, मेरे कजन के हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, मौसा जी एक्सपायर हो गए थे. फाइन, बट नाउ आई एम ओके. इट्स अ लाइफ, वी हैव टू कंटिन्यू इट. She started leading a healthy life thereafter, and she is very thankful to homeopathy. Kamal bhai always says, कभी भी कोई चीज वन वे नहीं होनी चाहिए. जो भी चीज चले टू वे. अगर टू वे चलेगी तो हम बहुत अच्छा वर्क करेंगे, चीज को और समझेंगे. कुछ आप बोलेंगे, कुछ मैं बोलूंगा, तो इसमें चीजें निकल के आएंगी, निखर के आएंगी और संभलेंगी. तो बताइए, हाउ टू एंटर इन दिस केस? प्लीज. Good. Ailment from death of one after another. Good. Good. Anyone else? Anyone else? Please. Dr. Nilofer, only ailment from death? What about reaction? What about the reaction of the patient? Horrible things profoundly. Definitely good. Horrible things affects him profoundly. Loss of one, but loss of loved ones, definitely. Loss of loved ones, sleeplessness, good. Fearful, good. Sudden shock, very good. Shock, very nice. Anyone else?
We'll go one by one with all this rubric. Ailment from death of loved one, ailment from death of one after another. Good. But what is the reaction of the patient? Ailment from shock, fearful. Fearful is a psychosis. Please, ailment is good. Ailment is good. But fearfulness is psychosis. And patient in depression went to psychiatrist. Not so easy. Again, I'm telling, it's not so easy to treat such type of cases. If sir not cited us in his lecture, good. Patient reaction is scared. But what is the rubric? Sudden shock is an ailment. Good. Shock is an ailment. Shock and ailment from loved one. Both are the rubric. But patient reaction is scared. Scared and went in depression. Please mind. Went in depression. And she what is this? What is this? That second paragraph. Thereon, whenever any phone rang, she thought her father would inform her about something fatal or someone's death. What is this? Anguish. Good. Patient is not to believe that death happened. Good, but it is not rubric. Please come to presumptuous. Good, very nice. Anguish. Frightful. Anyone else? Anyone else? Panic. Good. See, panic. Good. Frightful. Good. Presumptuous is good. Happened. Horrible things happened. It's good. Okay, fine. Fine. I will come on this case after one another case. There's a scenario of 3 cases. Please, I have mentioned this rubrics in my notebook, and we will talk on it. We'll talk on it. Shock, ailment from shock, ailment from death of loved one, ailment for repeated death, panic. We'll talk one by one on everything. We'll talk by sleeplessness, depression, thought persistent. We'll talk on all this. Delirium anguish. Delirium anxious is a rubric. Delirium anxious. Good. Okay, fine. Come to second case. Please, I will come back on that case. The scenario for 3 cases. In 3 cases, rubric will be same, but come to different phase of the rubric. How patient represent in front of us in different look. Second case. Please come to second case. Master Tejas, 3.5-year-old child. We came across this case in 2010. Please mind the date. Year. Please mind the year. Definitely delusion. It's not delusion. Please listen this case. Then we'll come back on this case. Okay? It's not delusion. That happened. It's not delusion. Delusion always when there is only imagination, false imaginations, false perception. It's fact. फैक्ट में उनका लॉस हुआ है.
Please come on this case. Master Tejas, 3.5-year-old child. We came across this case in 2010. Chief complaint, having allergic bronchitis, difficulty in breathing, having allergic bronchitis at the age of 3.5 years. Having allergic bronchitis, difficulty in breathing, so frightened, डर कितना है, rattling sound in chest, allergic rhinitis, again fear, distension of abdomen, modality, aggravation from change of weather and in winter. Mental journal, when he was 1.5 years old, his crutch caretaker slapped him in the face. His face had turned blue. When he returned to his home, he stopped going to church thereafter. He was so afraid of that incident. That little child was so afraid. Teacher slapped him so hard on his face. पांचों की पांचों उंगलियां छप गई and face turned blue. He was so afraid of that incident that he even avoided taking that road of church. That's a crutch. Avoided taking that road. Though the road was 1 lane ahead of his house. He was so afraid of that incident that even avoiding taking that road, though the road was 1 lane ahead of his house. He was convinced that the teacher would be standing at the gate or on the road, would again slap him in his face. Child was so afraid कि नहीं, टीचर अभी भी गेट पे खड़ी होगी, अभी भी हो सकता है रोड पे खड़ी हो, वो मुझे अभी भी मार दे. She was so afraid. He used to take different route, which was around 200 meters longer than this road, but never dare to pass that road again, of that crutch road. Otherwise, the patient was very timid, loved to play with tools and car. He was very enthusiastic for outing. Again, now in this case, where we land up, from where we have to enter the case. Sir always says, first rubric should be solid. पहला rubric ऐसा होना चाहिए जिससे एंटर करें फिर बाहर निकल जाए. It's good. लेकिन अगर एंटर ही गलत है तो बाहर कैसे निकलेंगे? In this case, please. Ailment from fright. Good. Ailment from fright. Good. Second case, ailment from fright. Good. Ailment from fright. Delirium frightful. Good. Very nice. But in 2010, sir stated this delirium frightful in last year. मैं बात करूं तो मैंने लास्ट ईयर से पहले कभी डिलीरियम सोचा भी नहीं था. ठीक है. एंड दिस केस वाज इन 2010. अभी तो हम बात कर लेते हैं टाइम पासेस टू स्लोली, डिलीरियम, डिल्यूजन. इन 2010 no way. But fine, it's good. According to case, delirium frightful, it's good. Timid, definitely timid, but we can't enter to the timid. Timidity is, timidity को भी बताऊंगा timidity क्या है इसकी. सेकंड केस में हम timidity को सर्कल करके रखेंगे. इसकी timidity से कहाँ पे एंटर करना है वो भी बताऊंगा. Timid. Anyone else? Dr. Nilofer, very good. Delirium frightful, very good. Complaint starter after slap. Calcaria sir. Why you land up the medicine? Don't land up in medicine. Please come to rubric. Medicine तो मैं आपको पहले बोल देता हूँ तीनों की क्या है. No issues.
हमें कहाँ से एंटर करना है, इट इज मोर इम्पोर्टेंट. मेडिसिन नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस. मेडिसिन बोलना है तो मैं तो शुरू में बोल देता. नो, प्लीज लैंड अप ऑन rubrics. Focus on rubric. Ailment from fright, fear of fright still remain. Very good. Fear of fright remains same. Very good. Fear long lasting. Very good. Fright maybe towards syphilis. Again, sir give that rubric. Sir give that rubric and we applied it. Kamal bhaiya always says, अगर आपको कुछ नहीं पता और कोई कुछ देता है और इवन सर देते हैं तो फिर तो बात ही अलग है. अगर कोई कुछ देता है तो उसको यहाँ बैक ऑफ द माइंड रख लें अपने, यहाँ पे. उसको नकारे नहीं, उसको क्रॉस मत करें. जस्ट कीप इट हियर. व्हेन टाइम विल कम and your knowledge will improve, then you applied that case, then you applied that thing or that saying. उस टाइम पे अप्लाई होगी. Right with insult feeling. Very good. सर ने इतना इजी कर दिया कि हम लोग ऐसे सिंपल बढ़िया बढ़िया रूबिक बोल देते हैं, मजा आता है. Anyone else? Sensitive to rudeness. Very good. Again, sensitive to rudeness and timidity. Sensitive to rudeness. Good. Very good. Child is sensitive to rudeness and he was just 1.5 years old. So rudeness है तो बच्चा always there. Very good. Sensitive to rudeness. But there is not entry point. That will help to differentiate that. Definitely. Very good, Dr. Nisha. ये हेल्प करेगा हमारे सोरा को बाहर निकालने के लिए, एंटर करने के लिए नहीं. वेरी गुड, वेरी गुड. सेंसिटिव टू रूडनेस हमें हेल्प करेगा जब हम मेडिसिन को डिफरेंशिएट करेंगे. जब 2-3 मेडिसिन आ जाएंगी, व्हेन देयर इज अ लाइन ऑफ क्यूज ऑफ 2 or 3 मेडिसिन, देन we'll differentiate it. Anyone else? Any more? Okay, fine. There's ailment from fright, ailment from delirium frightful, timid, fear of fright, fear of fright remain long lasting, fright with insulting feeling, and sensitive to rudeness. Definitely, we'll talk on it. First case, we'll talk on that. This case, we'll talk on it. Now come to third case. Now come to third case. Third case. बॉम्ब. सर का केस है ये. सर ने इस केस में in 2000 case of Dr. Praful Vijayakas sir in Mahabaleshwar 2008 workshop. अगर सर ने इस 2008 में ये वर्कशॉप में केस नहीं दिया होता तो शायद हमें रूब्रिक तो पता लगना ही नहीं था कभी. तो सर ने 2008 में ये केस, दैट्स व्हाई आई सेड कि डॉक्टर हैनीमैन discover that science, but sir make it so simple and so calculative. सर ने इसको इतना सिंपल कर दिया कि अब तो अच्छा केस आता है, रूब्रिक लगाया, दवाई दिया. सर make it so simple and calculative. Thanks to sir for everything. और कमल भैया ने हमें गाइड, आंखों को कैसे चलना है, पाथ दिया कि कैसे चलना है इसको हमने. For everything, God is so kind for everyone. Come to this case, and before starting this case, my humble request to all those doctors
who just go through this case, जो इस केस से जा चुके हैं, जिन्होंने ये केस देख चुके हैं, प्लीज अब वो इस केस में ये रूब्रिक नहीं बोलेंगे. प्लीज माइंड द केस, माइंड. क्योंकि अगर इस केस में हम वो रूब्रिक बोल देंगे तो जो इन सब की थॉट बनी हुई है, जो चेन ऑफ थॉट्स है, वो ब्रेक हो जाएगी. कमल भैया कहते हैं कभी चेन को ब्रेक नहीं करना चाहिए, चेन को कंटिन्यू चलाना है हमें. चेन चलाएंगे तभी सर्कल बनेगा. ठीक है, तो प्लीज जिसने केस देख रखा है, कोई भी इस रूब्रिक को नहीं बोलेगा प्लीज. ठीक है, क्योंकि इट्स सर केस, इट्स नॉट माय केस. A case in Mahabaleshwar 2008. She was shocked after her grandfather's demise. A case of a girl, age around 8 years old, I forgot the name. She was shocked after her grandfather's demise. When her grandfather expired, she was in hospital. She was in hospital and her uncle brought his corpse on stretcher. He tied that corpse to the stretcher in front of her. She thought her uncle killed her grandfather, and she was so convinced. She was so convinced that she told everyone about her cruel uncle who killed her grandfather. There's a case of a girl in 2008 Mahabaleshwar workshop. She was shocked after her grandfather demise. When her grandfather expired, please understand this wording. सर ने इस वर्डिंग में बहुत कुछ दिया और इतना प्यारा रूब्रिक दिया. उस टाइम का सर ने डिलीरियम दिया. डेफिनेटली इट्स अ डिलीरियम, बट उस टाइम का डिलीरियम दिया और अभी डिलीरियम हमें अब दिया. तब सर ने बताया इट्स अ सिम्पलेस्ट. वी एंटर्ड थ्रू दिस केस फ्रॉम हियर. When her grandfather expired, she was in hospital. That child was in hospital. Her uncle brought his grandfather body on stretcher, and in front of, उसके बिल्कुल बच्ची के सामने उन्होंने उस डेड बॉडी को स्ट्रेचर से ऐसे बांधा. तो दैट जो उस बच्ची के माइंड में क्या वो क्या, her uncle killed her grandfather, and she was so convinced that she told everyone about her cruel uncle who killed her grandfather. Now, I will not ask ailment from injury received. Definitely. Now, I will not ask any rubric because this is a sir case. Sir gives the rubric. I applied in first two cases and got the results, very good results. But in this case, I will not ask the rubric. We'll go through the scenario. As our Guru, Dr. Praful Vijayakar sir explained and taught us. As our Guru, Dr. Praful Vijayakar sir explained and taught us in certain, he cited it in the last year lectures. Sir's slide, it's not my slide. Sir ने ये last year जब डिलीरियम कराया था तब ये last year सर ने स्लाइड ली थी. I rewrite this. It is not my slide. It's a rewritten by me. Only sir given this slide. In certain conditions where blood biochemistry changes due to loss. In certain conditions where blood biochemistry changes due to loss of fluid or profuse hemorrhage or diarrhea or vomiting. Please, मैंने इसको रेड इसलिए किया है, इसको समझे. लॉस ऑफ फ्लूइड, प्रोफ्यूज हेमरेज. अब इसको समझे प्रोफ्यूज हेमरेज कहाँ होती है.
मेटोरेजिया, एक्सीडेंटल डेथ नहीं, डेथ के बाद तो क्या मेडिसिन लेगा वो, लेकिन हाँ एक्सीडेंट्स के बाद किसी भी चीज में प्रोफ्यूज ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, एनीथिंग, लॉस ऑफ फ्लूइड, प्रोफ्यूज प्रोफ्यूज हेमरेज, और डायरिया और वॉमिटिंग। डायरिया भी इतना कि उसको बहुत ज्यादा कर दे, उसकी बायोकेमिस्ट्री को चेंज कर दे, और वॉमिटिंग in certain conditions where blood biochemistry changes due to loss of fluid, profuse hemorrhage or diarrhea or vomiting, mind goes out of control. Mind goes out of control. Again, another slide by Sir. In certain conditions with present and last scenario, ये जो चल रहा है कोरोना वायरस, इसके ऊपर सर ने स्लाइड दिया था ये. In certain conditions when biochemical changes occur due to infections, either bacterial or viral, which change our biochemical changes. Infection, bacterial or viral, and mind goes out of control. Mind goes out of control. Please mind, out of control. आउट ऑफ कंट्रोल कुछ भी हो सकता है. जैसे कि आउट ऑफ कंट्रोल को आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि आउट ऑफ कंट्रोल तभी होगा जब 100 पैसे होगा. भैया हमेशा बोलते हैं कि मान लीजिए अभी 10th के एग्जाम दिए, हमें मेडिकल में जाना है तो हमें 50% चाहिए या 70% चाहिए. इसको लाने के लिए सिर्फ 11th में मेडिकल चाहिए, उसको लाने के लिए 90% करना और उसके आगे चलना, ये हमारी मर्जी है, ये हमारी विश है. लेकिन किसी भी चीज को, माइंड को आउट ऑफ कंट्रोल, वो 30 पैसे भी हो सकता है, 40 पैसे भी, 50 पैसे भी, 60 पैसे भी, एनीवेयर है, एनीवेयर. जरूरी नहीं है कि वो 100 होगा तभी माइंड आउट ऑफ कंट्रोल है. अगर रोड पे स्पीड लिमिट 90 है और वो 100 जाती है तो इट्स पॉसिबल यू कैन गो आउट ऑफ कंट्रोल. गाड़ी गोज आउट ऑफ कंट्रोल. प्लीज माइंड. And certain conditions when biochemical changes occur due to infections, bacterial or viral, and mind goes out of control, these are acute delirious state. These are acute delirious state. So then, so ये acute delirious states है. Please mind. First case depression. Second case again, मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे उस 2010 में 2015 में ये डिलीरियम नहीं पता था और ये क्यों डिलीरियस स्टेट नहीं पता थी, लेकिन ये अभी समझने के लिए, ताकि आगे इसको कैरी करें. इसको यही नहीं रोकना, किसी भी चीज को, हर चीज को आगे कैरी करना है, आगे कैरी करना है. These are acute delirious state. फर्स्ट केस डिप्रेशन केस, उसमें एक्यूट डिलीरियस केस है. फर्स्ट केस में सी डिप्रेशन, अ फादर किल्ड, अ फादर फोन रैंग. जब फादर का फोन रैंग होगा तो वो कुछ गलत बता देंगे. शी वाज सो कन्विंस्ड कि उसका फादर ने डेथ की न्यूज देनी है, कोई फैटल न्यूज देनी है. इट्स अ डिलीरियम, इट्स अ डिलीरियम. प्लीज, are you understanding? Are you understanding this? Very good. So the acute delirious state, what is the delirium in this case? In this case is, what is the delirium? What is the delirium? Please tell. Good. सर ने बहुत अच्छा बोला था लास्ट. सर ने बोला लास्ट ईयर कि डिलीरियम को सिर्फ डिलीरियम में मत सोचना.
try to think delirium beyond delirium rubric 2. ये डिलीरियस स्टेट है, फाइन, लेकिन हर कुछ डिलीरियम के अंदर ही डिलीरियम का नहीं पड़ा हुआ. शुड को हमें जानना चाहिए, हमें सर्च करनी चाहिए, हमें इधर उधर भागना चाहिए समझने के लिए कि सिर्फ डिलीरियम के अंदर ही है या और भी कोई रूब्रिक्स है. प्लीज understand this. Ailment from fright, we are talking about ailment from shock. First case, ailment from shock, ailment from repeated death, ill panic. But we should not enter through this. Repeated death is only ambragnesia. अगर ऐसे लैंड अप करेंगे तो हम एक ही जगह पे लैंड अप हो जाएंगे. बट हमें एंटर करना है इस डिलीरियम से. साथ में एलिमेंट, बड़ा रूब्रिक पकड़ ले एलिमेंट का, उसको रिपीटेड डेथ मत लीजिए, उसको एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन लीजिए, या एलिमेंट फ्रॉम शॉक लीजिए, मेंटल शॉक लीजिए. गुड, मेंटल शॉक इज गुड. एलिमेंट फ्रॉम मेंटल शॉक, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, फाइन. रिपीटेड शॉक में तो 2-3 दवाइयां हैं साली. एक एम्ब्रा है बहुत अच्छी. Try to think delirium beyond delirium rubric 2. The rubric is confounding objects and ideas. Confounding objects and ideas. What is this? Confounding objects and ideas. Confusion का delirium is confounding. Confusion. Mind में confusion बना हुआ है कि मेरे फादर जब भी कॉल करेंगे, आई गॉट कंफ्यूज. जब भी फादर कॉल करेंगे, आई एम कन्विंस्ड. ये जो है फ्रैंक सिप्लिस है. सर मेंशन, यहाँ का वहां कर देना, वहां का यहाँ कर देना, सब कुछ मिक्स अप कर देना, एंटेंगल कर देना, दबा देना, साथ में जोड़ देना, कुछ पता ना लगे क्या है क्या नहीं. जहां नहीं पता लगे, दैट्स ए delirious state. Confounding objects and ideas. So, are you clear? अभी कंफाउंडिंग को और क्लियर करेंगे, ऐसा नहीं छोड़ेंगे इसको. अभी इस रूब्रिक को ऐसा लेंगे ताकि हमारे कुछ इसको समझ में आए, कंफाउंडिंग क्या है समझ आए, इसको कैसे लेना है. सिर्फ मैं इसको यहाँ छोड़ नहीं रहा, छोड़ के जा नहीं रहा, इस पे बात करेंगे. So confounding object and ideas is also an acute delirious condition. But sir, in 2008 Mahabaleshwar, not use that delirious word. Sir, use word. It's a frank syphilis. Confounding object and ideas is a syphilis. Enter through this. लेकिन अभी समझ आता है. सर ने पिछले साल बोला कि डिलीरियस स्टेट क्या है. पिछले साल सर ने हमें बताया कि डिलीरियस स्टेट क्या है, जहां पे हिल जाए, जहां पे इधर उधर ऐसे चलने लग जाए, कुछ पता ही ना लगे इधर आएगा या इधर जाएगा, इधर जाएगा कुछ ना पता लगे. दैट्स एक्यूट डिलीरियस स्टेट और कंडीशन. Confounding objects and ideas is also an acute delirious condition. Okay, fine. First we come on the case, then we go for confounding. What is confounding object and ideas? Fine. Firstly, first case, alien from death of loved one, and we enter through the case by confounding object and ideas and ailment from death of loved one. Now tell me, there's a 6 remedies, but 6th medicine I never studied that 6th remedy. Talk about that 5 remedies: sulfur, calcarea, nux vomica, plat and podo. कौन सा देना और क्यों देना है? क्यों होम्योपैथी में बहुत मायने रखता है. Why is most important thing in homeopathy. You should go
Why with everything? Why this happened to you? Why happened to you? Why? Until sir always mentioned in his lecture कि why का जब तक पूछते रहो why जब तक कि आपको सही आंसर नहीं मिल जाता. Confounding object and ideas eliminate from death of loved one. Please now tell me what is the remedy? Yes, like hysteria, no logics. Logics failed. Dr. Shilpa, I will come on confounding objects and ideas. But first, we talk on this first case, that Mrs. Seema case, 35 years old. Why, why, which remedy? Please. Please, converse. बताइए कौन सी रेमेडी है. अभी और मजा आएगा. प्लीज बोलिए कौन सा मेडिसिन है. Definitely, I will show. जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ क्योंकि बहुत कुछ है पढ़ने वाला. She suffered from severe depression. She got anxious and used to remain inside, absorbed in her own thoughts. She becomes sleepless, loss of appetite with no thirst. Past history में 1 month back, her father had called her to inform about her maternal death in law's death. She could not believe her ears, but went in this funeral. She was trying to pull herself out of this trauma, but not able. But another incident, her maternal uncle passed away, same, and again her father rang her. She became totally depressed. Thereon, whenever any phone rang, she thought her father called and give me ये तो confounding है. This thought made her more depressed than she avoided company, not able to talk to anyone. She was annoyed at father for all these incidents, afraid of what her in-laws would say. She went to psychiatrist, but it only got worsened as day passes. मानिए यकीन मानिए ये इतना सही केस है. इससे ज्यादा केस में नहीं गए थे हम उस टाइम पे. ये इतना ही केस है. ये रूटीन क्लिनिक का केस है. इससे ज्यादा नहीं गए हम. One fine day, she visited the clinic, astonished, and she is very thankful to homeopathy. She is very thankful to homeopathy. Now, Calcaria, Latina. Sir, please explain more about rubrics. Definitely, I will talk about rubric. ये भी उससे ज्यादा important है. Rubrics पे ही आऊंगा. Confounding object and ideas और भी rubrics clear करेंगे. But it is more important. आप enter तो कर गए. अभिमन्यु की तरह अंदर मत फंसे रहना. Enter तो कर गए. How come out? Enter and out दोनों important है. सिर्फ एक ही चीज important नहीं है. Please mind. Enter करना और बाहर निकलना दोनों important है. As she is timid, scared, personality easily affected by incident. Calcaria, fine. Anticipated before picking the father calls. Calcaria, fine. Okay. Anyone else? Otherwise, I will go for the slide. Good. So, confounding object and ideas, eliminate from death of loved one? No. Medicine, not Calcaria. Medicine is sulfur. But why sulfur? I will talk on it.
Why sulfur? Sir, always emphasize, जितना important अंदर आना है उतना ही important बाहर जाना भी है. एक ही जगह नहीं रहना है, वन वे नहीं चलना है हमें. तो हमें बाहर कैसे निकलना है इस केस में? एंटर थ्रू द कंफाउंडिंग. एंड बाहर कैसे निकले? डिस्पोजिशन से, which mention is equation number 213. आप सबको मालूम होगा. I will just go through because more rubric will take. We shall never be able to cure conformity to nature if we do not, even in every case of these, even if we do not, even in such as are acute, observe along with other symptoms, those relating to change in the state. Please mind this state of the mind and disposition. उसकी disposition क्या है? उस लेडी की disposition क्या थी? मेरे in-laws वाले क्या कहेंगे? और annoyed with father. Fine. उसको शर्म महसूस हो रही थी. And syphilitic case है, so we don't go for the sharam, don't go for the shame, insult. No, we go for the bigger rubric, more syphilitic rubric. That's embarrassment. This position, if we do not select for the patient relief and from among medicines, the disease force, which in addition to similarity of its other symptom to those of disease is also capable of producing those aconite will seldom, calcaria dete to will end up on the wrong side. Aconite will seldom or never affect either a rapid or permanent cure in the patient of quiet and calm and equable disposition. Please mind this disposition at the present scenario. उस सिनेरियो में बच्चा कैसा है, उस सिनेरियो में वो लेडी कैसी है, उस सिनेरियो में वो तीसरा केस कैसा है, उसके हिसाब से मेडिसिन है. Just as little will one also sensitive to rudeness, na? It was in a second case. Okay, fine. And just as little will not formically serviceable, their disposition is mild and phlegmatic. Mild and phlegmatic. Phlegmatic भी same है मतलब phlegmatic का. Okay. Ulcerative where it is happy, gay and obstinate. Ignitia where it is imperturbable, easily excited and easily vexed हो जाती है. वो जो ऐसा नहीं होता उन पे ignition नहीं देना. तो same in this confounding object and ideas, ailment from death of loved one, and disposition is embarrassing. That's embarrassment. Okay, you find one more rubric. That's embarrassment. एंटर भी रूब्रिक से और बाहर भी रूब्रिक से. कहीं बीच में कोई ऐसे इधर उधर नहीं भटकना है. सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ऐसे रहो ऐसे. एवरीथिंग इज सो कैलकुलेटिव. 1 + 1 = 2 + 2 = 4. So sir say homeopathy is mathematics. Second case, ailment from fright, confounding object and ideas, and allergic constitution. Again, medicine. Okay, fine. That child was very much happy with tools and mechanical tools, creative activities. So medicine again was sulfur. And third case of sir, I don't know the medicine. But I know that rubric confounding object and ideas. I entered this case, these two cases via SIRS. वो सर ने जो हमें वो रुब्रिक दिया 2008 में, confounding object and ideas. Are you understanding? Good. Dr. Nisha, you said very well. Embarrassed feeling. That's embarrassment. Rubric is embarrassment. All this is okay.
यहाँ तक ठीक है सबको? कंफाउंडिंग, नाउ कम टू कंफाउंडिंग. गुड, गुड, गुड डॉक्टर नीलूफर. Confounding. Confounding is a totally sickness, is a delirious state. Confounding is an acute delirious state. अभी तीनों सिनेरियो को माइंड में रखिएगा प्लीज. तीनों सिनेरियो को माइंड में रख के हम आगे चलेंगे, तभी हमें चीज को क्लियर होगा, नहीं तो क्लियर नहीं होगा. प्लीज, है ना? तो कंफाउंडिंग इट इज एन एक्यूट डिलीरियस स्टेट टू कंफ्यूज और सरप्राइज समबॉडी. टू कंफ्यूज, कंफ्यूज, मैंने बोला ना कंफ्यूजन का सिफिलिस, कंफ्यूजन का डिलीरियम कंफाउंडिंग है. इट इज एक्यूट डिलीरियस स्टेट टू कंफ्यूज और सरप्राइज समबॉडी, prove something or somebody wrong. नहीं, ये तो ऐसे ही है. वो तो टीचर वहां खड़ी ही होगी. मैं कह रहा हूँ फादर बोल रहे हैं, रात को भी बोल रहे हैं फादर चल बेटे, कहते नहीं वो तो खड़ी होगी. टू प्रूव समथिंग एंड समबॉडी रॉन्ग. नो, so entangled. Words are so entangled, so it become delirious. Thinking one of other and other of one. ये सर के वर्डिंग है, ये सर के वर्डिंग है 2008 के. थिंकिंग वन ऑफ अदर एंड अदर ऑफ वन. यहाँ का वहां और वहां का यहाँ, एग्जैक्टली सेम वर्डिंग है सर के ये वाले. यहाँ का वहां का यहाँ. सर ने कंफाउंडिंग समझाया ही ऐसे था. यहाँ का वहां है, वहां का यहाँ है. और उलझना, उलझाना, यानी ऐसा एक उलझाना होता है सिंपल, जैसे कंफ्यूजन. मन का उलझाना इज कंफ्यूजन. मन की उलझन, क्या करूं, कैसे करूं, उसको क्या जवाब दूं, जैसे मन की उलझन. मन की उलझन इज अ कंफ्यूजन. बट उसको इतना उलझा देना कि उसको ब्रेक करके बाहर निकालना, उसको डिस्टॉर्ट करके बाहर निकालना, दैट्स अ डिलीरियम, दैट्स अ सिफिलिस, इट्स अ कंफाउंडिंग. उससे बाहर ही नहीं निकल पाना. Mixing of effects, distorted image and relationship make someone understand with reasoning, but he or she does not understand and remain fixed to his point. किसी को समझाना to make someone understand, किसी को समझाना to make someone understand with reasoning कि नहीं बेटे वहां पे वो रोड पे क्या करेगी. उसके हस्बैंड, लेडी के हस्बैंड उसको फोन करते थे, अरे वो क्यों करेंगे, वो क्यों किसी को कर देंगे. वो कई बार बीच में वर्ड भी बोल जाती थी, कहती नहीं मेरे फादर ने ही सबको मार दिया. एक दो बार उसने ये भी बोला, लेकिन नहीं, उसको समझा रहे नहीं वो क्यों करेंगे. नहीं, समझना ही नहीं है, क्योंकि माइंड तो डिलीरियम में चला गया ना. डिलीरियम में चला गया तो वहां समझ नहीं आती है. माइंड गोज आउट ऑफ कंट्रोल. टू मेक समवन अंडरस्टैंड विद रीजनिंग, बट ही और शी, जिसको आप समझा रहे हैं, बट ही और शी डज नॉट अंडरस्टैंड, फिक्स टू हिज पॉइंट, remain fixed to his point, where reasoning failed to clear the confusion. Confound, confound, ये भी बहुत अच्छा रूब्रिक यहाँ पे भी है. confound of colors with one another. मेल्स के लिए तो कॉमन है प्लीज, है ना, मेल्स अपना मत लेना, लेकिन अगर फीमेल्स भी इसको कंफाउंड करते हैं तो दिक्कत है. प्लीज माइंड, मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग अलग है. एक मेरे बहुत अच्छे भाई है, वो ये वर्ड यूज करते हैं. अगर उनको बोल दो ना आज ब्लैक पहननी है, कहेंगे वो वाह मजा आ गया. उनको कह दो ना स्टील ग्रे पहननी है, कहेंगे यार तू ऐसे मत बोलेगा, सीधा बोलेगा ना ब्लैक या ब्लू. ग्रेश ब्लू और ब्लू मेरे को नहीं समझ आती. ग्रेश ब्लू एंड ब्लू आर द सेम. स्टील ग्रे एंड ब्लैक इज द सेम. जहाँ पे अटक जाए, घुग्गी अटक गई, जहाँ पे अटक गई अटक गई. लेकिन अगेन इसको हमने उनके अंदर कंफाउंडिंग नहीं लेना है. ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोला है, एग्जाम्पल कोट करने के लिए बोला. लेकिन हाँ, अगर ये चीज फीमेल्स के अंदर नेल पॉलिश लगानी है और उसको पिंक और रेड के अंदर दिक्कत हो रही है, तो हमें इसको समझना पड़ेगा. ठीक है.
confounding color with one another, like steel gray or black or grayish blue or blue, confound between orange and tinu, ginger and carrot root, अरबी। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट कुछ भी ऑब्जेक्ट जिसको स्टिक टू फैक्ट, जो है सच में है, ट्रुथ में है, जैसे विंडो है, डोर है, इनके बीच में भी हो जाना। ए थिंग दैट कैन बी सीन एंड टच बट इट इज नॉट अलाइव, स्टिक टू फैक्ट्स। ए थिंग, ए पर्सन, मैटर टू विच थॉट इज डायरेक्टेड। An object is the person, place or thing that receive the action. Ideas, what is ideas? और हमारे पास रूब्रिक भी है, ideas abundant ideas. A plan thought, ideas is a plan, thought, suggestion, especially when about to do in a particular situation. कोई भी situation में, तभी मैंने बोला confounding object and ideas. A picture, impression in your mind, that is idea. जब कोई भी इंप्रेशन आपके माइंड में है, उसका इंटेंगल हो जाना, उसका उलझ जाना, दो आइडियाज का आपस में उलझ जाना, और गोस माइंड आउट ऑफ कंट्रोल, किसी प्लान का आपस में उलझ जाना। कई लोग कहते हैं ना, यार इसका तो उलझा ही रहता है, इसका तो उलझा ही रहता है। तभी भैया ने बोला मेक योर लाइफ इज सो सिंपल, सिंपल सिंपल सिंपल। अगर उलझन बनाओगे तो कंफ्यूजन में चले जाओगे, कंफ्यूजन देन लैंड अप इन द syphilis, delirium, confounding. सर ने भैया ने अपने लास्ट लेक्चर में बोला था कि delusion is a process and delirium is a end product. So that's a confounding object and ideas. Is it clear to all? Now different rubric of confounding in our repertory. Go through this all rubric. बहुत अच्छे rubrics हैं, अच्छे तरह यूज होते हैं। Confounding object and ideas. First, confounding object, confounding present with past. अभी को पीछे से उलझा देना, लाइफ को उलझा देना, प्रेजेंट विद पास्ट। प्लीज अंडरस्टैंड, प्रेजेंट विद पास्ट, प्रेजेंट लाइफ को पिछली लाइफ से उलझा देना आइडियाज और ऑब्जेक्ट्स को लेके। मिस्टेक मेकिंग इन टाइम, कंफाउंड डेज ऑफ द वीक, ट्यूसडे को थर्सडे, थर्सडे को सैटरडे, ये कंफाउंड ऑफ द वीक। फ्यूचर विद पास्ट, फ्यूचर को पीछे से, ऐसी आइडियाज को बीच में एंटेंगल कर देना। प्रेजेंट विद फ्यूचर, अभी जो चल रहा है उसको लेके फ्यूचर को, प्रेजेंट विद पास्ट। अगेन दिस रुब्रिक इज वेरी गुड। मिस्टेक मेकिंग इन राइटिंग, कंफाउंडिंग लेटर, नहीं ये तो पी है, ओ को बोल देना किसी भी लेटर को, पी को किसी भी लेटर से, एस को किसी भी लेटर से, कंफाउंड हो जाना, फिक्स हो जाना। आप उसको समझाना भी चाहेंगे। इट इज नॉट कॉमन इन प्लीज माइंड, चिल्ड्रंस के अंदर बहुत कॉमन लेटर्स। इसके तीन कंफाउंडिंग ऑब्जेक्ट एंड आइडियाज के थ्री नोट क्वेश्चन है। मिस्टेक मेकिंग, कंफ्यूजन ऑफ माइंड एंड डिसकंसर्टेड। मिस्टेक मेकिंग, confusion of mind and disconcerted. Mistake making is a sora, confusion of the process of the life, and confounding is syphilis, delirium of the confusion. Mistake making, a thing that can be seen or touched. Again, mistake, you all understand, wrong, तो गलती से हो गया इसे सोरा। मगर ब्लंडर हो गया, अभी मैं बोलूंगा यार गलती से हो गया, मेरे को चोट लग गई, मैं कहूंगा गलती से हो गया, आप कहेंगे कोई बात नहीं, दैट्स अ सोरा। अगर मैं जानबूझ के मारूंगा और जानबूझ के चाकू मार दूंगा तो इट्स अ ब्लंडर, तो सोरा और सिफिलिस, मिस्टेक इज अ सोरा एंड delirium is a syphilis.
कॉजेज ऑफ द मिस्टेकिंग, लैक ऑफ नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज का ना होना, जैसे वो अरबी का बोला था, अदरक और अरबी, अदरक का और अरबी का ना पता होना इट्स फाइन। कईयों को नहीं पता होता, वो नहीं जाते मार्केट में, मार्केट में नहीं गए तो नहीं मिला, लेकिन हम उसको फिक्स हो जाना वो कंफाउंडिंग है। एक इम्पोर्टेंट, अभी आज की मेडिसिन पे चलते हैं, टाइम नॉट परमिट अस टू। सल्फर, सल्फर, differentiating in object and ideas, mistake, mistake making, confusion and delirium, differentiating in objects, ऑब्जेक्ट को डिफरेंशिएट करने में मिस्टेक करना, मिस्टेक इन मेकिंग डिफरेंशिएशन एंड कंफाउंडिंग ऑब्जेक्ट एंड आइडियाज, मिस्टेक मेकिंग इन लोकेलिटीज, losing his well, losing confusion, loses his way in well known street, कैसे चीज एक से दूसरे में जाती है, talking, talking, mistake making in talking, using wrong word, name of object seen instead of one desire, जो वो देख रहा है उसकी जगह दूसरे का नाम ले देना, इट्स अ मिस्टेक। ये जनरल चीज है, जनरल हमारी प्रैक्टिस में मिलती है, मगर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को मिक्स कर देना, दैट्स अ कंफ्यूजन। कंफ्यूजन इज अ साइकोसिफिलिस, mistake is a sora, confusion is psychosyphilis, delirium is a frank syphilis. Delusion, delusion, please. Delusion is a process, disease process, and delirium is an end product. Delusion is a process, delusion is a process, disease process है ये। अगर आपने अपने सारे डिल्यूजन निकाल दिए तो आप कहीं पे भी नहीं जाते, यू आर हैप्पी। यही भैया ने हमें सिखाया है। आई टोल्ड यू ना कि भैया ने हमें लाइफ को जीना सिखाया। क्यों सिखाया? क्योंकि हमने अपने सारे डिल्यूजन्स को मिटा दिए। ये ऐसा करेगा तो क्या होगा, वो ऐसा करेगा तो क्या होगा, क्या करना है भैया? ऑलवेज एज प्लीज, हमारे पास बहुत सारी एनर्जीज लगाने की जगह है, उधर एनर्जी लगाओ, अपने डिल्यूजन्स पे एनर्जी मत लगाओ। तो रिमूव योर डिल्यूजन, लास्ट में भी भैया ने यही बोला था, डिल्यूजन इज अ प्रोसेस, डिजीज प्रोसेस। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे यू डेफिनेटली लैंड अप इन द डिलीरियम, you will definitely land up in the delirium, and delirium is an end product. Delusion is a disease process and delirium is an end product. Please, मैं बार बार इस स्लाइड को इतना फोर्स क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि हमें लाइफ को इजी भी बनाना है, खाली पेशेंट को ठीक नहीं करना। हम ठीक होंगे तभी पेशेंट ठीक होंगे। Delusion is a process, disease process, and delirium is an end product. So let's see, let's see सर ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया है। लेट्स सी सर्स मोस्ट वैल्यूएबल अंडरस्टैंडिंग। सर ने इस प्रोसेस को कैसे सिखाया है उसको देखते हैं। लेट्स सी सर्स मोस्ट वैल्यूएबल अंडरस्टैंडिंग। ये वर्डिंग भैया के हैं, मोस्ट वैल्यूएबल अंडरस्टैंडिंग, ये मेरे वर्डिंग नहीं है, भैया ने बोला ये स्लाइड डालने के लिए। लेट्स सी सर्स मोस्ट वैल्यूएबल अंडरस्टैंडिंग। डिल्यूजन, रैग्स, हम सब ने पढ़े हुए हैं रुब्रिक, लेकिन इसको कैसे देखना है लाइफ में वो देखिए। डिल्यूजन, रैग्स सीम्स ब्यूटीफुल, ओल्ड रैग्स आर एज फाइन एज सिल्क। ये तो जब हम फर्स्ट ईयर कॉलेज में गए तब से पढ़ रहे हैं। रैग्स का मतलब फटे पुराने, वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। और पुराने फटे कपड़े कपड़े ऐसे लगते हैं, देखते हैं ना आप लोगों को जो इधर उधर आते जाते, बहुत सारे लोग खासतौर के गर्मियों में फटे हुए कपड़े पहन के पागलों की तरह इधर उधर घूम रहे होते हैं कई लोग, है ना, कहीं कहीं ऐसे होते हैं। तो रैग सीम्स ब्यूटीफुल, ऑल रैग्स आर एज फाइन एज सिल्क, ये डिल्यूजन है, ये साइकोसिफिलिस है।
उनको इस पे प्रिस्क्राइब नहीं करना है। What is the delirium of rag seems beautiful, all rags are as fine as silk? इसका delirium क्या है? Can anyone say? कोई कह सकता है? Delusion, rag seems beautiful and all rags seem as fine as silk. इसका delirium क्या हो सकता है? Please. इसका delirium क्या हो सकता है? Anyone? If no, then say no. No, it's not confounding. It's not confounding. Definitely no idea. ये सर की बहुत ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस इन प्रॉपर वे. डिल्यूजन रैग सीम्स ब्यूटीफुल, ऑल रैग्स आर एज फाइन एज सिल्क. डिलीरियम, अगर ऐसा डिल्यूजन होगा तो वो कहाँ लैंड अप होगा? तभी सर ने बोला प्रिडिक्टिव होम्योपैथी. पहले से प्रिडिक्शन आनी चाहिए कि कौन कहाँ पे कैसे लैंड अप होगा. ऐसे ही नहीं, कोई हवा में लैंड अप नहीं हो जाएगा. दैट्स व्हाई सर सेज होम्योपैथी इज मैथमेटिक्स. Delusion, rag seems beautiful and all rags are as fine as silk. No exclusive. No exclusive. It's a delirium rambling. Delirium rambling. And what is rambling? आप इसको पढ़िएगा. What is rambling? Rambling is a spreading in many direction. Spreading in many direction. कोई सी भी हर जगह पे फैल जाना. Either body, either clothes, either building. चाहे उसकी कप बोर्ड, हम बोलते हैं ना सल्फर की कप बोर्ड ऐसी ऐसी फैली होती है, पता नहीं कैसी है. तो स्प्रेडिंग इन मेनी डायरेक्शन. स्पीच एंड राइटिंग वर लॉन्ग, वेरी लॉन्ग एंड कंफ्यूज्ड. इतनी लंबी लंबी बातें बोलना और कंफ्यूज में बहकी बहकी बातें करना. कई पेशेंट आते हैं ना, लंबी लंबी और बहकी बहकी बातें करते हैं. लंबी और कंफ्यूज टॉक्स करते हैं, हमें समझ ही नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं. लॉन्ग एंड कंफ्यूज, उनमें हमें डिलीरियम लोक्वेस्टी ले लेते हैं. नो, delirium rambling. Long and confused, to talk for a long time in a confused way. अगर पेशेंट कंफ्यूज वे में बात कर रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा उसको क्या बोलना है, बस बोलते जा रहा है बोलते जा रहा है, then delirium rambling. Delirium loquacity and delirium rambling both are the separate topic. Proceeding without a specific goal, purpose or direction. बस चलते जाना है चलते जाना है. आप यूएस में जाएंगे तो वहां पे बोलते हैं वॉन्डर अबाउट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ए रैम्बलर वॉक. रैम्बलर बोलते हैं इनको. वहां पे जो माउंटेनर्स होते हैं उनको कई बार रैम्बलर बोलते हैं, विचरने वाले, जो इधर उधर विचरते रहते हैं. अगेन वो भी डिलीरियम है. डिलीरियम रैम्बलिंग, प्लीज अंडरस्टैंड दिस रूब्रिक टू. ऐसे बहुत सारे रूब्रिक हैं. डिलीरियम रैम्बलिंग. Yeah, definitely I will tell you. Spreading in many direction मतलब जैसे old building है. Understand? If there is a old building, वो इधर भी गई हुई है उधर भी गई हुई है, तहखाना टाइप में. उसकी कप बोर्ड, हमें सल्फर का पता है ना, वो सल्फर कैसा रहता है, इधर उधर बिखरा हुआ रहता है. इधर उधर बिखरा हुआ रहता है. स्प्रेडिंग इन, उसको चीज, अरे मैंने तो यहाँ रखा था ऐसे, एक मिनट ऐसे ढूंढ ऐसे ढूंढ. कंफ्यूज. हर जगह पे बिखराव है उसके. हर जगह पे बिखराव है. हाँ, अगर स्टडी में ऐसा है तो फाइन. अगर मैं क्लिनिक में भी बिखराव रखूं, यहाँ पे कुछ पड़ा है यहाँ पे कुछ पड़ा है यहाँ पे कुछ पड़ा है, then it's not good. Then it's not good. Spreading in many direction, either body, building or a cupboard, it's okay. Yeah, definitely फैला हुआ. बट फैला हुआ इज ए सिंपल. फैले हुए को आप समेट सकते हैं. इसमें आपको समझ आएगा वो कंफ्यूज है, वो सब चीजें हैं. देन यू गो फॉर द डिलीरियम. और डिल्यूजन में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही ऐसे मार्जिनल है.
थोड़े से ही शुरू होता है। हाँ हाँ, अगर हम गो टू द 100% डिलीरियम, देन देयर इज अ बिग डिफरेंस। मगर कहीं ना कहीं डिल्यूजन जाके डिलीरियम में कन्वर्ट तो होगा ना। व्हेन इट कन्वर्टेड फ्रॉम डिल्यूजन टू डिलीरियम, देन देयर इज डिफरेंस। तो ये जो मार्जिनल डिफरेंस है इसको भी समझना है, और आज की डेट में यही सिनेरियो चल रहा है। इतने से डिफरेंस वाला, इतने बड़े डिफरेंस वाला तुम्हारे पास आता ही नहीं है। अंडरस्टैंड? दिस rubric is clear for you? Spreading in many direction, speech and writing very long and confused, to talk for a long time in a confused way, proceeding without a specific goal, purpose or direction, wandering about one place to another, a rambling walk, rambler जो विचरने वाले होते हैं। I will show you 3-4 such type of slides. Then, because time goes beyond our limitations, otherwise हम delirium में चले जाएंगे, हमें delirium देना पड़ेगा, है ना? Delusion, as if confused from insufficient sleep. इसका delirium, again हर चीज का delusion का delirium है, हमें समझना है सिर्फ। Delusion as if confused, ये single डिल्यूजन में सिंगल रेमडीज हैं और 2 रेमडीज होंगी, जिसमें मोस्टली इज सल्फर। डिल्यूजन एज इफ कंफ्यूज फ्रॉम इनसफिशिएंट स्लीप, नींद की पूरी ना आने की वजह से ऐसे लगना जैसे पूरा दिन समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कई लोग उठते हैं ना सुबह सुबह। इस डिल्यूजन को कैसे पिक करना है? कैसे पिक करना है? रात को अगर मेरी नींद कम हो जाए ना जी डॉक्टर साहब, अगर मेरी नींद कम हो जाए तो मेरा पूरा दिन खराब जाता है, मेरा पूरा दिन खराब जाता है, मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूं। कई लोग कहते हैं मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको क्यों फर्क पड़ेगा, वो तो सल्फर है ही नहीं। लेकिन हाँ, जो सल्फर है, डिल्यूजन एज ए कंफ्यूज फ्रॉम इनसफिशिएंट स्लीप, जब उसको सफिशिएंट स्लीप नहीं मिलती। हर किसी की अपनी अपनी सफिशिएंट है, प्लीज इसको ऐसे मत लीजिएगा कि 8 आवर्स स्लीप इज सफिशिएंट फॉर एवरीवन। मेरे को 8 आवर्स चाहिए, किरण भैया उनको नहीं चाहिए, उनका 6 घंटे में काम हो जाता है, 5 घंटे में काम हो जाता है। कमल भैया, उनको सिर्फ 5 से 6 घंटे की स्लीप चाहिए। ही इज एक्टिव, एवरी टाइम ही इज एक्टिव। इसका डिल्यूजन क्या है? डिल्यूजन एज इफ कंफ्यूज फ्रॉम इनसफिशिएंट स्लीप, डिलीरियम ऑन क्लोजिंग आईज, डिलीरियम विद स्लीपलेसनेस, डिलीरियम कुछ भी जा सकता है, कहीं पे भी लैंड अप हो सकता है। यहाँ से फेंका, लैंड अप कहाँ होगा गॉड नोस। लेकिन हमने इनके अंदर उनको देखना है। हो सकता है कुछ और भी हो, आप और भी देखिए तो शायद और भी चीज निकल है। अभी राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सल्फर ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली सल्फर। और कुछ भी आ सकता है। ये मैंने फिर सबसे पहली स्लाइड में यही बोला था, सर ने जो हमें नॉलेज दी है, इट्स बाय माय अंडरस्टैंडिंग। आप इसको ग्रांटेड नहीं, लेकिन प्लीज थिंक वाया दिस पाथ। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, सर की नॉलेज तो वाइड है, उसको तो पार पाना मुश्किल है, मेरे लिए तो इस जन्म में पाना बहुत मुश्किल है। इल्यूजन, ही वुड फेंट ऑन लाइंग डाउन, अगर वो लेटेगा तो ऐसे लगेगा जैसे कि वो फेंट फेंट हो गया है। जैसे ही लेटता है तो डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता लगता, जैसे लेटने ही वुड फेंट, मैं लेट ही नहीं सकता, मैं बैठे बैठे लात काटूंगा, मुझे लगता है जैसे कि मैं बिल्कुल निसत्था हो जाऊंगा, मेरे अंदर कुछ बचेगा ही नहीं, मेरे को लेटने के लिए चाहिए, चाहिए में यानी मैं लेट नहीं सकता। इसका डिलीरियम क्या है? अंडरस्टैंड दिस डिल्यूजन, ही वुड फेंट ऑन लाइंग डाउन, ही वुड फेंट, ऐसे लगेगा, ये लगना है। शुरू में किसी ने बोला था डिल्यूजन, डिल्यूजन ऑफ डेथ समथिंग। ट्रुथ और लगना दोनों में फर्क है। डिल्यूजन इज ए फॉल्स परसेप्शन, डिल्यूजन इज अ बेस, डिलीरियम इज ए एंड प्रोडक्ट। डिल्यूजन इज अ फॉल्स परसेप्शन, इट्स अगेन साइकोसिनेटिक। He would faint on lying down. Delirium is delirium on closing the eyes. Delirium on closing the eyes, on falling asleep. See grimaces. Grimaces मतलब
ऐसे ऐसे फेस नजर आने, कोई ऐसा बना रहा है, कोई ऐसा बना रहा है, तो इसलिए उसको लगता है मैं फेंट हो जाऊंगा। इल्यूजन में तो उसको लगता रहता है कि मैं फेंट हो जाऊंगा, लेटूंगा तो मैं लेटूंगा तो फेंट हो जाऊंगा। और जैसे डिलीरियम में जाता है, कहता है मैं तो आंखें भी नहीं बंद, लेटना तो दूर की बात, आंखें भी नहीं बंद कर सकता। और लेटते हुए तो ऐसे लगता है जैसे मुझे कोई चिढ़ा रहा है, कोई मुंह बना रहा है। सी सी द सिफिलिस, सी द सिफिलिस। फेंट डिल्यूजन में सिर्फ उसको महसूस होता है, मुझे ऐसे लगता है मैं लेटूंगा तो मैं फेंट हो जाऊंगा। जब उसको लेटाते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन डिलीरियम में सच में हो जाता है उसके साथ। डिलीरियम ऑन क्लोजिंग द आईज एंड सिग्निफिकेंस ऑन फॉलिंग asleep। डिल्यूजन, एक और डिल्यूजन है सल्फर का डिल्यूजन। शी हैज अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग, उसके पास सब कुछ भरपूर मात्रा में है। उसके पास चाहे प्यार, उसके पास चाहे नॉलेज, उसके पास चाहे ब्यूटी, वो कुछ भी लगा ले, इतना अफेक्शनेट है, इतना नॉलेज वाला है। चार्लेटन, चार्लेटन रूब्रिक है ना एक, यानी उसके पास सब कुछ भरपूर मात्रा में है। ये उसका डिल्यूजन है, डॉक्टर साहब मेरे पास तो सब कुछ है, सब कुछ है, भगवान का दिया सब कुछ है। ये उसका डिल्यूजन है। बट वेयर ही लैंड अप इन डिलीरियम, वेयर ही लैंड अप इन डिलीरियम, डिलीरियम फैंटास्टिक, डिलीरियम फैंटास्टिक, आई एम फैंटास्टिक। और मैं भाई है ना तेरा, फैंटास्टिक हूँ, डिलीरियम फैंटास्टिक। His mind this big delusion, she has abundance of everything, उसके पास सब कुछ बहुत भरपूर मात्रा में है। ये उसका डिल्यूजन है, ये उसकी इमेजिनेशन है। सच में ऐसा है नहीं, सच में ऐसा है नहीं। वो तो वैनिटी में है, सल्फर तो वैनिटी में है, लेकिन ये उसका डिल्यूजन है। बट वेयर इज डिलीरियम, उसका डिलीरियम क्या है? वो ट्रुथ है, वो एंड प्रोडक्ट है, वो बायोकेमिस्ट्री चेंज करके आया है, वो बायोकेमिकल चेंज चेंज करके आया है। द डिलीरियम इज फैंटास्टिक, आई एम फैंटास्टिक। कंफ्यूजन विद ब्लीडिंग, फिजिकल को भी देख लीजिए। जब कभी ब्लीड करता है तो मेरे को मन मन जो होता है ना, क्लियर नहीं है, मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूं। ब्लीड करते मैं तो बुखला सा जाता हूँ। कंफ्यूजन विद ब्लीडिंग, डिलीरियम आफ्टर हेमरेज और हेमराइडल हेमरेज, कुछ भी बोल सकते हैं इसको आप। डिलीरियम विद वेरिकोज वेन, अगेन इट्स अ ब्लीडिंग बट इनसाइड ब्लीडिंग। अंडरस्टैंड? डिल्यूजन, डिल्यूजन, द ग्राउंड ऑन विच ही स्टूड वाज वेवरिंग, लड़खड़ा रही है, जैसे कि वो बहुत वीक है ग्राउंड उसका। डिल्यूजन, ग्राउंड ऑन विच ही स्टूड इज वेवरिंग, यानी मैं ऐसे हिल के जाना। ठीक है, हिल के जाना। डिल्यूजन, शी इज क्रश्ड, उसको कुचल दिया है, मुझे कोई कुचल दिया है, मेरी लाइफ को कुचल के रख दिया है। मैं, जबकि हुआ कुछ भी नहीं है, ये कुचला हुई लाइफ है मेरी, कुचली हुई लाइफ है। डिल्यूजन, बेड इज टू स्मॉल, बहुत छोटा है, जिंदगी बहुत छोटी है। डिल्यूजन, बेड इज टू स्मॉल, खाने की जगह ही नहीं है, चलने की जगह ही नहीं है, बैठने की जगह ही नहीं है, लाइफ इज टू स्मॉल। ये उसके ये उसकी इमेजिनेशन है, ये सच्चाई नहीं है, ये इमेजिनेशन है। इसकी सच्चाई क्या है? व्हेन ही लैंड अप इन द डिलीरियम, डिलीरियम फ्राइटफुल, हियर इज द फ्राइटफुल। वो डरा हुआ है कि शेकिंग मेरे को क्रश कर देंगे, बेड इज लाइफ इज सो स्मॉल। ये जब चीजें आएंगी तो दिस थिंग्स लैंड अप इन द फ्राइटफुल। प्लीज माइंड, हर चीज का, तभी भैया ने बोला डिल्यूजन इज ए प्रोसेस। अगर इस प्रोसेस को हम नहीं ठीक करेंगे तो वी लैंड अप इन द फ्राइट, और वी लैंड अप इन द delirium, which is not good for us. That's a delirium frightful. Delusion, brain tightening. There is fog in the brain. Brain tightening means ब्रेन जकड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब मेरा सर ऐसे लगता है जैसे जकड़ा हुआ है, सब कुछ जकड़ा 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 हुआ है।
कुछ टाइट टाइट है, पूरा दिन दिमाग जकड़ा हुआ रहता है। देयर इज फॉग इन ब्रेन, डिल्यूजन, देयर इज फॉग इन ब्रेन। फॉग मतलब अब फॉग है, फॉग में कुछ नहीं समझ आता क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है। फॉग इन द ब्रेन, दिमाग तो बिल्कुल ही सन है जी, कुछ भी नहीं पता मुझे। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन है, मुझे कुछ नहीं पता। देयर इज फॉग इन ब्रेन। ड्राइविंग करो, फॉग के अंदर कैसा महसूस होता है आपको, दैट्स वैसा ही फील होता है डिल्यूजन को देखो। इमेजिनेशन, उसकी इमेजिनेशन ऐसी है जैसे कि उसका ब्रेन फॉग के अंदर चल रहा है। डिलीरियम, इसका डिलीरियम क्या है, डिलीरियम मेनिंजाइटिस सेरिब्रोस्पाइनलिस। अब इसको डिलीरियम फीवर में भी चले जाओ, चाहे डिलीरियम सेरिब्रोस्पाइनलिस, इसको इधर भी आ जाओ चाहे। अगेन डिल्यूजन, एवरीथिंग ऑन हिम वाज ट्रेम्बलिंग, उसके पास जो भी है ट्रेम्बलिंग। इसका डिलीरियम क्या है, डिलीरियम विद ट्रेम्बलिंग। हर चीज, हर चीज, हर चीज ऐसी है, हर चीज ऐसी है। इसीलिए सर भैया ने बोला अभी बहुत कुछ आ गया है, लेकिन हमारा टाइम परमिट नहीं करता हम ज्यादा इसको डील करें। प्लीज माइंड दिस लाइंस, डिल्यूजन इज ए प्रोसेस, डिल्यूजन इज ए डिजीज प्रोसेस। आप इसको अपने आप फाइंड आउट करें। सर ने बहुत अच्छा बोला, सर हमेशा बोलते हैं कि सर ने हमें फिशिंग सिखाई है, हमें फिश पकड़ के मुंह में नहीं दी। तो फिशिंग सिखाई है तो हमें फिशिंग को सीखना है, और आगे उसको, और आगे 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 सीखते जाना है। डिल्यूजन इज ए प्रोसेस, इज ए डिजीज प्रोसेस। अपने डिल्यूजन प्लीज क्लियर कर दीजिए, सब कुछ हटा दीजिए, ताकि आपकी लाइफ, बिकॉज यू आर होम्योपैथ, यू शुड नो delusion is not good for us. Delusion is a disease process, and if we don't remove this disease process, then definitely we will end up in the delirium. And that delirium से बचना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, प्लीज। लेकिन why to land up in the delirium? डिजीज प्रोसेस को ध्यान रखिए। अंडरस्टैंड? Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Please tell me. Okay, fine, fine. Definitely good. So we, with this, thanks to all, thanks to everyone, thanks to Kamal Bhaiya, thanks to Bade sir, thanks to Predictive. Thank you, thank you, thank you very much. Thank you, Dr. Nisha.